యూకేలో నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం. Double standards in the fight against terrorism. We also agree that the forces which espouse extremist ideologies should not be allowed to misuse democratic freedoms. Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held to account. Our security agencies will continue to enhance cooperation and coordination on matters such as the extradition of economic offenders. फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर हम विचार साझा करते रहे हैं. हम जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं. सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अनिवार्य है. आज के युग की मांग विस्तारवाद नहीं, विकासवाद ही है. Friends, we have continued to exchange views on peace and stability in the Indo-Pacific, the ongoing conflict in Ukraine, and the situation in West Asia. We support early restoration of peace and stability. Respect for sovereignty and territorial integrity of all countries is essential. Today's era demands development, not expansionism. फ्रेंड्स, पिछले महीने अहमदाबाद में हुई दुर्घटना में मारे गए लोगों में कई यूके के नागरिक भाई बहन भी थे. उनके परिवार वालों के प्रति हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं. यूके में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों में एक लिविंग ब्रिज का काम करते हैं. दे डिड नॉट जस्ट ब्रिंग करी फ्रॉम इंडिया, बट ऑल्सो क्रिएटिविटी, कमिटमेंट एंड कैरेक्टर. इनका योगदान सिर्फ यूके की समृद्ध इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूके के कल्चर, स्पोर्ट्स और पब्लिक सर्विस में भी दिखता है. Friends, last month in the unfortunate plane crash in Ahmedabad, our sisters and brothers of the UK were among those who lost their lives. I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. The people of Indian origin in the UK form a living bridge that connects our two nations. They did not just bring curry from India, but also creativity, commitment, and character. Their immense contributions are not just limited to UK's prosperous economy, but are also visible in UK's culture, sports, and public service. फ्रेंड्स, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है. फॉर बोथ ऑफ अस, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring सॉलिड पार्टनरशिप. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है. Friends, I would be remiss not to mention cricket when India and the UK are coming together, especially during a test series. For both of us, cricket is not just a game, but a passion. And also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building a high-scoring, solid partnership. The agreements concluded today and Vision 2035 are milestones which advance this very spirit. प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए आभार व्यक्त करता हूं. मैं आपको
भारत यात्रा करने का निमंत्रण भी देता हूं और आशा करता हूं कि हमें शीघ्र ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister, I thank you once again for your warm hospitality. I would also like to take this opportunity to extend an equally warm invitation to you to visit India. I am eagerly looking forward to hosting you in India very, very soon. Thank you very much. Thank you, Excellency.